बाबा पूरा मिस हुआ है हम। So hello and a very good afternoon YouTube, and as you can see the whole studio, it's in a complete state of chaos. It's a mess, and काफ़ी दिनों से I've been too lazy to shoot any videos, as you all know. तो ये बार GoPro पहनने का प्लान था, but then again too lazy to ride. तो anyways, today's video is about a little bit of a garage update once again and a studio update all combined. So let me give you an idea of what all's happened here. I've got a 46-inch का LED TV and a sound bar and a subwoofer here and a pretty little Xbox One here and some nice storage के pockets. सो दैट हैपेंड एंड थोड़े बहुत इधर पोस्टर वोस्टर जो मेरे पास बेड के नीचे से निकले वो पूरे लगा दिया मैं, और ये करंट चले गया, देखिए यूपीएस पावर का आ गया अपन. एनीवेज, सो लॉट ऑफ यू हु आर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम आर प्रॉब्ली कंफ्यूज्ड कि भाई क्या तो भी हो रहा, क्या तो भी कर दे रहे यार. R1 इतनी अच्छी गाड़ी है, कहीं को लिए कहीं को बेच दे रहे, ब्ला 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 ब्ला. सो नाउ this is probably one of the most amazing bikes I've owned ever. The previous owner maintained it very nicely. उसके अलावा भी the kind of accessories it had, the kind of accessories I put in, the exhaust, the remapping, I mean the clutch work, and I entirely did the bike up at home. And according to me, इससे खूबसूरत लीटर क्लास गाड़ी कोई बना नहीं सकते, because the heaviness, the feel, पूरे आजकल की गाड़ियाँ छोटे हैं, एकदम दिस एंटायर कॉकपिट फील, इट्स जस्ट फकिंग लवली. आई मीन इट्स समथिंग एल्स. एंड माशाल्लाह से AP नंबर है अल्हम्दुलिल्लाह, सो दैट इज़ देयर. इट्स अ थिंग हियर इन हैदराबाद. एंड बट फाइनली टाइम टू पार्ट वेज. व्हाट इन 6 months आई रोड अराउंड 7,000 kilometers ऑन द बाइक, सो क्वाइट लॉट. महीने में 1000 किलोमीटर की रनिंग हो रही थी. And finally I thought, why not, let's get something new, something different. But अपन उतने भी रिच नहीं है कि 3 गाड़ियाँ एक साथ मेंटेन कर सके. So first of all I went ahead and picked up the Goldwing. So the Goldwing is gonna be in another video. I covered it up wantedly because I didn't want to show it to you guys, but let me give you guys a sneak peek. Oh yes, yeah. So that's my new Goldwing. I mean, of course it's not brand new, it's used, but then again it's a Goldwing, man. So uska reveal video is going to be something different. But for now, let's talk about what all is going to be happening. So as you can see, I got the stock exhaust here. So first of all, let's start with Enfield पे क्या होने वाला है. As you all saw, the music system, I invested a lot in it, but the Goldwing I got it now, so I'm going to be fitting a subwoofer and some bigger 6-inch speakers and all that into the bike. तो इसके ऊपर और दो गाड़ियाँ म्यूजिक सिस्टम के रख के बेकार है. And as the R1 is being sold, and you all might be wondering कि पूरी गाड़ी खुली गई कोई, कहीं मैं पाटा मार ले रहा हूँ तो नहीं. No, that's not the story. I had fixed some LED lights inside the bike which were not to everybody's liking, तो वो पूरे strip down करके निकाल दिया मैं. And the battery, Yuasa, it needed some charging, तो बैटरी को भी चार्ज वार्ज करके और एक फाइनल सर्विस करके ब्रेक पैड्स डाल के दे देना है टू द न्यू ओनर. एंड यू ऑल नो, मैं जब गाड़ी रख के बेचता हूँ किसी को, तो इट्स एज गुड एज पिकिंग इट अप अ बाइक फ्रॉम द शोरूम. एंड आई एम गिविंग इट अवे विद ऑल द एक्स्ट्रा फिटिंग्स, द फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, द लीवर्स, गार्ड्स, ब्ला 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 ब्ला, बोथ द कीज, एवरीथिंग. मतलब अपना ज़्यादा शार्ट रहता ही नहीं, तो जो भी लिया उन्हें खुश रहना. सो या, that's happening on this bike. That's why it's all dismantled, and this is all dismantled because कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था, वाट लग गई. तो the Gudsevaks you see on here are already sold to somebody, subscriber in Bagalkot, and shout out to that guy. पोस्ट करते कि बंदा immediately ले लिया. So when I posted कि I'm selling the Gudsevaks, people were confused कि भाई क्या मैं Interceptor भी तो नहीं बेच दे रहा हूँ. भाई नहीं, I really love this bike. I mean, both of them, they're like my babies, and God knows if I could, I would keep this. I would never sell it, but पैसा झाड़ पे नहीं लगता. So yeah, this has to go. And yeah, anyways, I'm tired of too many wheelies and fast riding. After a while you just kind of get
ज़रा वो एक शुरू हो जाता कि भाई बस अंदर से आवाज़ आ जाती कि बस बहुत हो गया, अब थोड़े दिन थोड़ा रिलैक्स करो बोल के. सो प्रॉब्ली समवेयर डाउन द लाइन, अ ईयर लेटर और अनदर 6 months लेटर, इसके रिप्लेसमेंट में और एक लीटर क्लास आएंगी, समथिंग डिफरेंट, अ 5 blade और समथिंग. बट वो सब बात की बात है. सो इसके ऊपर क्या हो रहा था, ये एंटायर इंजन केस इज गोइंग टू बी painted black, the alloys are going to be changed, suspension front and back is going to be changed, and the exhaust I'm going to be putting a 2-in-1 full system SS Moto ka, the red tail light. So basically you heard it first here, this is going to be kind of like a flat tracker cum scrambler project for me, and a very good friend of mine is going to probably help me out with that. Who that is you'll know in the next video. ज़रा वीडियोस काफ़ी दिन से कम हो गए तो अब वापस पूरे दन अपडेट करना शुरू करेंगे अपन. So yeah, that's what's happening. So you can see the Brembo RCS 19, it's still there, a lot of the stuff is still there, but a lot of stuff's gonna go. I got this really nice temperature and voltage ka display thingy here. Everything has to be connected, pura khulli hai gaadi. And yeah, this bike's gonna get a lithium ion battery that's sitting right there. It's very lightweight, lithium ion ka advantage wo ich rehta. So this is going to be kind of, and also it's going to be getting a big bore kit. So it's going to be some crazy stuff. So yeah, that's about it for my little garage update for now. I have to ये पूरे खोल के शिप आउट कर देना है, R1 भी जुड़ा देना है, गोल्डविंग का कंप्लीट 1.5-2 लाख रुपए का सामान. It's on the way from the USA, and yep. So you guys might be wondering मैं सूरत का क्यों नहीं बता रहा हूँ. Well, because I look like shit. I hadn't had a shower in 2 days. I had to go to Bhopal all the way to get that bike, and उसके बाद से I've been very stressed. फिर ये पूरे काम back to back आ गए. Literally I've been on and off since forever. So yeah, thank you for watching, and yeah, do drop your comments below. What do you think of the new garage update, and what do you think is going to be coming in soon? So bye bye.